અમદાવાદમાં આગની ઘટનાઓને રોકવા માટે હોટવર્ક એટલે કે ફેબ્રિકેશનનું કામ કરતા લોકો માટે નવી એસઓપી જાહેર કરવામાં આવી છે। સામાન્ય રીતે બિલ્ડિંગના કામ શરૂ હોય ત્યાં આગ લાગવાની ઘટના બનતી હોય છે, ત્યારે આવી ઘટનાઓ હવે પછી શહેરમાં ન બને તે માટે અમદાવાદના ફાયર વિભાગે કમર કસી છે। ફેબ્રિકેશનનું કામ કરતા લોકો માટે માત્ર એસઓપી નહીં, ટ્રેનિંગ પણ આપવાનું અભિયાન શરૂ કરાયું છે, જેમાં ગ્રાઇડિંગ, બિલ્ડિંગ કરનારા કારીગરોને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવશે। તો એસઓપી મુજબ ફેબ્રિકેશનનું કામ ચાલતું હોય ત્યાં રેતી, પાણી જેવા પદાર્થો રાખવા અને બિલ્ડર્સે પણ ફરજિયાત રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા અંગેના નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે। अहमदाबाद कॉरपोरेशन के अंदर हर विस्तार में आने वाले सभी जो वेल्डर्स हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, तो उनको ध्यान में रख के एसओपी बनाई गई है। एसओपी में ये मेंशन किया गया है कि उन्होंने फायर सेफ्टी का ध्यान रखना है और फायर सेफ्टी के क्या क्या बातें हैं जो उन्हें जब वेल्डिंग करते हैं तब उसे फॉलो करना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है कि आइडेंटिफाई दी वेल्डर्स। तो इसके लिए जो एसओपी में जैसे बताया गया कि जितने वेल्डर्स हैं अपने हद विस्तार में आने वाले, कॉरपोरेशन के हद विस्तार में आने वाले सबका आइडेंटिफिकेशन होगा, सभी की उसका ट्रेनिंग की जाएगी, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और रजिस्टर्ड होने के बाद ही वो वेल्डर अपने अहमदाबाद कॉरपोरेशन के अंदर काम कर पाएगा। एटलीस्ट उन्हें ये मालूम हो जाएगा ट्रेनिंग के बाद कि हमें क्या क्या फायर सेफ्टी के संसाधन रखना है या क्या हमें फायर सेफ्टी की ध्यान रखना है जिससे सुरक्षित वो हार्डवर्क कर पाए। तो इसके लिए फर्स्ट बैच ट्रेनिंग का अरेंज किए थे, तकरीबन 50 वेल्डर्स की ट्रेनिंग हो चुकी है।